challenges on निराश्रित is a fund मालूम which is to be collected for the destitutes मालूम, जो गरीब लोग होते हैं उनको लिए वो fund collect किया जाता है on the agriculture produce. The relevant provision is of 1970. I have quoted that provision मालूम. That provision starts from page. I'm sorry मालूम. That is page 13 मालूम. जी पढ़िए मालूम. Section 4 है market committee to render assistance to the local authority, notwithstanding anything contained in Madhya Pradesh Agriculture Produce Market Act 1960. A market committee constituted under the act, said act shall collect from the purchaser of agriculture produce within the market area such agriculture produce at the rate not more than 500 grams per quintal as the state government may by the general or special order specify. Now the provision for charging is provided under section 5 capital A page 16 madam. Just a minute. Page 16 5 dash capital A madam. Point at which the collection is to be made under section 4 or section 5, the collection of specified agriculture produce at the specified rate A under clause 2 of subsection 1 of section 4 shall be made at the point at which market fee levied under section 19 of the Madhya Pradesh Krisi Upaj Mandi Adhiniyam is collected, and the provision of subsection 1 to 4 of section 19 of the said act shall apply to the collection of agriculture produce under this act as they apply levy of collection of fees under the act. Under section 5 shall be made at the point of first purchase of such agriculture produce brought for sale or brought to sold within the market area. So this was the point at which my collection is to be made for that in Rashid fees, my lord. Admittedly, here in this matter, my lord, I am a trader. I have purchased pulses from out of the state, my lord, and there is an exemption under section 69 wherein the mandi fees is exempted. Now what had happened, my lord, though mandi fees is exempted, but it is for the Rashid fees. We were and there is also one thing, my lord, page 18, the power by which this collection is to be made, my lord. Section 5 capital E, power to require defaulter market committee or defaulter local authority to deposit collection fees within a specified time. If a market committee or a local authority fails to collect or deliver specified agriculture produce in accordance with section 4 or 5, as the case may be, district panchayat and welfare officer may, with prior sanction of the collector, by a notice issued in such form as may be prescribed, to call upon the defaulter market committee or the defaulter local authority to deposit towards the estimated collections of such an account. So here is in this matter, my lord, there is no sanction by the collector, neither any notice was issued by the welfare officer. Now the mandi of the year 2006 to 2016-17 have issued the demand, my lord. And admittedly, my lord, the mandi don't have any jurisdiction because as per section 21(3), there is assessment of only 2 years provided under the Act of Mandi Act. Section 21 of there are two different things. 20 का 3 पढ़िएगा, 21 का 3 पढ़िएगा. That I have also quoted. हाँ. इसके ठीक overly page 19. आजकल नया प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग आ गया, लॉ ऑफ प्लीडिंग बदल गई क्या? No, my lord, because निराश्रित का एक्ट अवेलेबल नहीं था, वही बताया गया था कि सिर्फ जो है टैक्स फ्लीट किए जाते हैं. जी बात बिल्कुल सही, पर निराश्रित का एक्ट अवेलेबल नहीं था मार्केट में और इस कारण से मैंने कोट किया, बट मंडी एक्ट इज अवेलेबल. हाँ पढ़िए. जी सेक्शन 21 3 पढ़िएगा. The state government or any officer authorized by the state government or the board may on its or on his motion or on an application made to the state government re-verify the statement verified by the secretary within 2 years from the date of verification, and for this purpose such officer shall exercise the power of under section 20. ये तो 20 का है. 20 is मंडी फीस. मंडी फीस निराश्रित जो है वो मंडी को नहीं जाना, वो जाना है पंचायत को. पर वो कलेक्ट होगा तभी जब मंडी फीस लगेगी. जी ऐसा नहीं है that it is dependent on मंडी फीस. It is dependent. नहीं, it is not a surcharge. No, it is a fee. Argument ऐसा है कि No, टैक्स कटेगा तो उसके ऊपर. No, my lord. My argument is not that कि वो अलग फीस है. I know that, my lord. It is a separate different thing, and it's a different thing. Yes, my lord. You are exempted from मंडी fee, not from the निराश्रित fee. Yes, my lord. ठीक है ना? तो इसलिए नोटिस इशू करके सुन. There is already an interim order passed by the coordinate bench. नहीं कोऑर्डिनेट बेंच की, लेकिन नोटिस लेके हम उनको समझे तो. My lord, I'll convince my lord because it is the case, my lord, wherein the notice has been ड्रॉप ऑफ द हेड नहीं. भाई जी बिल्कुल समझ 16-17 से हम लोग दे भी रहे हैं. दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब तो वो एग्जम्पशन भी नहीं रहा और नया एक्ट भी आ गया था, तो इस कारण से मंडी फीस के साथ साथ राशि भी दे रहे हैं. अच्छा कर रहे हैं. बट लेकिन अनलेस आई एम कन्विंस्ड that this Rashid Shulk is being illegally collected from you,
No, there cannot. No, my lord, that is not the case. Here the case is, my lord, the notices is वाला आर्गुमेंट तो फेल हो गया ना आपका 2 साल वाला। नहीं 2 साल का तो मेरा ये कहना है कि सर वो जो डिमांड है वो 5 साल पहले की डिमांड है। हाँ नहीं ठीक है, वो है इसके बारे में क्या लिमिट? दूसरा जुरिडिक्शन के ग्राउंड पे सर जो नोटिस आई है वो मंडी ने इशू करी है, जबकि एज पर प्रोविजन द कलेक्शन इज टू बी मेड बाय द वेलफेयर ऑफिसर विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर। देखते हैं चलिए क्या करते हैं। नोटिस करके सोचते हैं, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स। But no coercive because the Federal bench has only given the no coercive steps। सही है सब, क्योंकि उन्होंने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नो कोर्सिव का ऑर्डर नहीं है, या तो आर पार स्टे होना चाहिए। तो मालूड मैं स्टे इम्प्यून ऑर्डर मालूड बट माय सबमिशन वुड बी मालूड मंडी कैन नॉट रिस्पोंडेंट्स आप चाहते हैं आपको हम 10 नोटिस सर्व करने की अनुमति दे। जी लुकिंग टू द अर्जेंसी इन द मैटर, petitioner is allowed to serve the for which he may take steps within 3 days, returnable in the week commencing 26 सितंबर 2022। लिस्ट ऑन 26 सितंबर 2022। आरएडी मोड से अगर कर दें हम 10 छोड़ दें, क्योंकि फिर आरएडी से फिर जाएगा अक्टूबर में। Serial number 41, Sri Deepak Kumar Advanshi,